गुड मॉर्निंग पे मैंने तो आज आम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गुड़ा डिस्कस करिया बैंकिंग आज पर्यंत आम बस ग्रामर देखुले डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख सारे आम एक्टिव पैसिव देख सारे सब देख सारापर आम से भी आम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करुले आज प्योरली खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उपरे आम डिस्कस करिया ओके SSC Banking previous year question discussion. अच्छा तुम बैंकिंग कि SSC एग्जाम पे जो प्रिपेयर करो तुम जानू कि प्रिपरेशन केते इम्पोर्टेंट क्लैरिटी केते इम्पोर्टेंट कि माने ठीक टाइम रे ठीक मटेरियल ठीक टाइम रे ठीक डाउट क्लियर होवा केते इम्पोर्टेंट सेति पई राय एकेडमी नि आसी गोटे कोर्स रे जो कि तुम मैंने 18 प्लस बैंकिंग एग्जाम और 20 प्लस SSC एग्जाम तुम प्रिपेयर कर माने गोटे कोर्स कर सबुथी तुमको प्रिपरेशन मिल या टू बेटर मत लगुनि या टू बेटर आ कि जदि कौन से पिलार ड्रीम अच्छी कि सी बैंकिंग कि SSC रे को जाए कि तार करियर गढ़ू आउ सी यदि प्रत्येक कोर्स माने प्रत्येक एग्जाम पे अलग अलग कर तार तो एक तो एनर्जी भी वेस्ट हम तार मोराल भी टिके लूज हो बेटर हम कि थरे के प्रिपेयर करवा आउ से प्रिपरेशन एते भलो हो कि आगु को जाई से प्रिपरेशन सब एग्जाम रे काम रे आसो तो सेति पई रे एकेडमी रो एई कोर्स रे जदि आपण माने बेनिफिट चाहउछन ताले ए कोर्स एनरोल करि परिबे एनरोल करे पई नंबर डायरेक्टली मेंशन नै गछि आउ ईमेल माने वेबसाइट एड्रेस भी अच्छी चाहिए ये जाकि आम सक्सेस स्टोरी गुड़ा भी आपण मैंने देखिपारे तो एनरोल पाई ए नंबर रे कॉल किबा मैसेज करंतु। अच्छा तो आउ बेसी वेट न करी जो आमे माने ये वीडियोटा देखुचे स्टार्ट करदवा आमे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़ा डिस्कस करिया हां एथरे मु कोठी को माने को एग्जाम रे क्वेश्चन आस्तला सेटा मु करछि आज गोटे स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें आज करिबा कि एरर डिटेक्शन माने को पार्ट रे एरर अछि हमें देखिबा इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस some part of the sentences have errors and some are correct हैला से को माने पूरा सेंटेंस टा बोलनो गोटे पार्ट रे ही एरर अछि फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर इफ द सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर योर आंसर इज नो एरर माने जदी हमें पढिला पर देखिले कि पूरा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट अछि ता माने हमें नो एरर चूज करबा किंबा जदी कोनसी गोटे पार्ट रे ग्रामेटिकली कोनसी एरर आमे देखि पारछे आमे सही पार्ट को चूज करबा आ सेटा हबो हम आंसर मु तुमको देखौची फर्स्ट तापर पर जेतरा हम क्वेश्चन डिस्कस करबा मु तुमको 30 सेकंड देबी प्रत्येक क्वेश्चन टा को तमे थरे देखि देबा पई तापर मु प्रत्येक क्वेश्चन को डिस्कस करि चलथिबी ठीक अछि ठीक है तो ए फर्स्ट सेंटेंस होची अ सीनियर डॉक्टर expressed concern about physicians recommended the vaccine about physicians recommended the vaccine no error अच्छा इस सेंटेंस रो अर्थ कोन कि गोटे सीनियर डॉक्टर सी तांकर कंसर्न कहउचंदी माने से टे कंसर्न्ड अछंदी कि जेतबेले से माने जेतबेले से जानछन जदि कि गोटे फिजिशियन अछि सी जदि कोन वैक्सीन दउची ता प्रति से टिके कंसर्न्ड अछंदी माने से टिके चिंतित अछंदी तो सेटा सेंटेंस की गोटे सीनियर डॉक्टर फिजिशियन मानकर वैक्सीन दबार जो रिकमेंडेशन अछि ता पर टिके चिंता व्यक्त करजंती किंतु एडी देखो एक्सप्रेस्ड कंसर्न फिजिशियंस रिकमेंडेड वैक्सीन एडी तम पढु पढु जानु तो एडी किछि गोटे भूल अछि एटा केबे ठीक साउंड करिवनी अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न ठीक अछि गोटे सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस कंसर्न करिथिले फिजिशियंस रिकमेंडेड द वैक्सीन फिजिशियंस हेले या अर्थ कहूँ फिजिशियंस गोटे फिजिशियन करो रेकमेंडेड द वैक्सीन गोटे सीनियर डॉक्टर गोटे फिजिशियन को रेकमेंडेड वैक्सीन
पई इसी कंसर्न कले एटा ठीक लागुची कि कौन होगा कथा कि गोटे सीनियर डॉक्टर से कंसर्न अच्छा कि जो फिजिशियंस माने जो वैक्सीन रेकमेंड करछंती से विषय से टिके कंसर्न अछंती तो एठी फिजिशियंस अपोस्ट्रोफी हबनी फिजिशियंस रेकमेंडेड भी हबनी रेकमेंडिंग फिजिशियंस रेकमेंडिंग द वैक्सीन सी ता अर्थ से होची से कहते सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न फिजिशियंस माने फिजिशियन माने जो माने वैक्सीन रेकमेंड करूछंती तांको पई से डॉक्टर कंसर्न देखौछंती तो एटा कोन एटा हम लॉजिकल तुम भाबी फटाफट मिल जाओ कि गोटे इंडिविजुअल फिजिशियन जोटा रेकमेंडेड थे अच्छा फिजिशियंस हेले भी एटी रेकमेंडेड तो आसीबनी ईडी फॉर्म तो रहबनी V3 फॉर्म रहबनी फिजिशियंस रेकमेंडेड द वैक्सीन ये तो गोटे अलग अलग सेंटेंस है एटा या से कनेक्टेड भी नुह एटी जे एक्सप्रेस्ड सिंपल पास्ट तापर से फिजिशियन ही केमती माने एटी रेकमेंडेड केमती ही जो ठीक है जी तो अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न ऑन माने को कंसर्न कर अबाउट अछि को कंसर्न करछनी फिजिशियंस जो फिजिशियंस माने रेकमेंड करछनी वैक्सीन से विषय से कंसर्न अछंती ठीक है जी रेकमेंडिंग वैक्सीन जेतले माने फिजिशियंस माने रेकमेंड करछनी वैक्सीन को तो नेक्स्ट देखिबा we have discussing all the known mechanisms of physical growth we have discussing all the known mechanism of physical growth हिंबा no error तो we have discussing have ing हुए की have ing हुए की have संगे आइदर बीन लगियो और have संगे आइदर बीन लगियो माने have been discussing हवा कथा have been discussing जदि हवा हेई थांदा तले हेई थांदा किंतु सेमति किछ नै we have discussing आमे जानि गलानी फर्स्ट पार्ट रे भूल अछि we have discussing all the known mechanisms of physical growth हला सी कौन कहूँ कि आमे माने डिस्कस करी से आमे जो मेकानिज्म अछि ऑल द मेकानिज्म सब मेकानिज्म फिजिकल ग्रोथ पे जो सब मेकानिज्म ताको आमे डिस्कस करिछु हैला सेटा कहूँ तो वी हैव डिस्कशन हबनी डिस्कसिंग हबनी हैव परे आईएनजी लागेनी बस सेते की हैव परे V3 कहबो वी हैव डिस्कस्ड we have discussed V3 ए पार्ट रे भूल अछि तो हमर आंसर होबो एटा we have discussed all the known mechanism of physical growth राइट देखो किए यदि कहिला अरे we have been discussing all the known mechanism of the physical growth भी तो हे परियो we have been discussing भी हे परियो कि हमें डिस्कस करी आसु अछु यदि सेटा भी करिवो चलिवो किंतु मिस्टेक ता जेहेतु हमें खोजी जे हम जानले कि ए पार्ट रे ही मिस्टेक अछि हमर आंसर आइदर तुम हैव बीन करो कि वी हैव डिस्कस करिछो आइदर ऑफ द केस रे आंसर ता हमर 1 रहिबो क्लियर ठीक नेक्स्ट चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू गोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट नो एरर चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू गोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन Halloween night है ना चिल्ड्रन एंजॉय चिल्ड्रन माने एंजॉय करंती लिसनिंग टू सुनिया पाए चिल्ड्रन माने एंजॉय करंती सुनिया पाए गो स्टोरीज केबे स्पेशली ऑन Halloween नाइट स्पेशली ऑन Halloween नाइट बडकू हम सब्जेक्ट इज चिल्ड्रन एंजॉय एटा गोटे यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप रो कि सब प्राय जनरल ट्रुथ गोटे टाइप रो यूनिवर्सल न होले भी गोटे जनरल ट्रुथ टाइप रो कि जनरली पिला माने स्टोरी सुनिया को एंजॉय करंती तो चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू गो स्टोरीज एथरे ए पर्यंत किछि भूल नाही स्पेशली ऑन द हैलोवीन नाइट स्पेशली कारण सी कहूँ कि जनरली तो शुणती कि सबुठू बेसी बेसी केतबेले सुनिया इच्छा हुए जो हैलोवीन नाइट थाए
तो जदि सेटा कहूची स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट ताहले भी किछि भूल नहीं त माने चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट तादरे किछि भूल नहीं तो आम आंसर कोन आसीबा कथा नो एरर हैला यदि कौन डाउट अच्छी देखी दिया आउ थे सेंटेंस किसी भूल नहीं चिल्ड्रेन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज चिल्ड्रेन मैंने घोस्ट स्टोरी सुनिया बहुत भल लगे केबे स्पेशली जेतेबेले हैलोवीन नाइट हैलोवीन थाए जेते हैलोवीन थाए तांको बेसी भल लगे सुनिया पाए राइट तो नेक्स्ट एटा गोटे ट्राई करो आई हैव मेनी वर्क टू डू अच्छा अच्छा एटा वन हे जाईची एटा हबो आई have many work to do एटा टिके ट्राई करो आई हैव मेनी वर्क टू डू पढ़ू पढ़ू ही लागुथबो कि किछि ना किछि गोटे भूल अछि ठीक अगर भूल अछि किंतु को पार्ट रे अछि ठीक के भाबी कि देखो कि यार नाउन वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ठीक अलाइन होची ना नहीं किंबा अन्य कोनोसी जगह एडजेक्टिव भी देखो एडवर्ब भी देखो देखो या भीतर यदि किछि गड़बड़ रहुची देखिला माने माने जणा पड़ जो गिव इट अ ट्राई तो हे जीवन 30 सेकंड हे गेलानी आई हैव मेनी वर्क टू डू अच्छा वर्क द काउंटेबल ना अनकाउंटेबल वर्क द काउंटेबल ना अनकाउंटेबल वर्क अनकाउंटेबल तो मेनी टा तो काउंटेबल संगे लगे तो वर्क संगे लगियो तो आंसर कौन होगा कथा आई हैव मच वर्क टू डू है मच वर्क टू डू माने बहुत काम अच्छी तो आई हैव मेनी वर्क ए पार्ट हेनी तो 3 टा होची भूल माने एटा होची हम आंसर आई हैव मच वर्क टू डू हबो मेनी वर्क टू डू हबनी जेतु वर्क टा अनकाउंटेबल नेक्स्ट टिके ट्राई करो देयर आर सो मेनी फिल्थ ऑल अराउंड द प्लेस नो एरर अच्छा फिल्थ माने अर्थ को गार्बेज अच्छा गार्बेज को देयर आर सो मेनी फिल्थ ऑल अराउंड द प्लेस अच्छा भाव कौन है आंसर थर्टी सेकेंड हो 30 सेकंड है तो देखो देर आर सो मेनी फिल्थ फिल्थ माने गार्बेज गार्बेज जनरली गार्बेज नो माने माने खराब खराब जिनस माने से गार्बेज टाइप रो खराब जिनस देर आर सो मेनी फिल्थ आमे गार्बेज को सेटा अनकाउंटेबल हे जाउची देखो मच हवा कथा सो फर्स्ट जिनस हला कि देर आर सो मच फिल्थ हवा कथा गोटे एठी मच हवा कथा सो मच फिल्थ हवा कथा राइट किंतु देर आर सो मच फिल्थ कहीं हम फिल्थ कलेक्टिव नाउन हिसाब रे जाउची तो सेटा सिंगुलर हबो तो कोन हबो कथा देर इज सो मच फिल्थ ऑल अराउंड द प्लेस सो देर इज सो मच फिल्थ ऑल अराउंड द प्लेस एटा होची हमरो भूल है ना सो देर इज so there is so much अच्छा so much filth all around the place बुझिएला ठीक है जी ठीक चल जी वेरी गुड नेक्स्ट देखिबा अच्छा a great many students have been declared successful ठीक है 30 seconds ट्राई करो
ठीक चलो फर्स्ट होची देखो a great many student have been declared successful लो किछि भूल नथिबो obviously have been declared correct structure follow करूची ताने फर्स्ट पार्ट रे किछि भूल थिबो a great many जोठी लागे सेठी प्लूरल लागे ता माने कोन होबा कथा एठी होबा कथा a great many students है a great many students जोटी great many लागे सेठी plural form of the collective noun लागे है तो ऐसे collective noun the plural form टा यूज हुए a great many students कारण एटी खाली गोटे स्टूडेंट great many गोटे स्टूडेंट तो फास्ट जदि लॉजिक लगेबो गोटे स्टूडेंट great many केमथि हो सेम जे लॉजिक लगो कि ग्रामेटिकल जो देखियो a great many पर सब बळे प्लूरल लागे तो एठी असला स्टूडेंट्स तो a great many students have been declared successful ताले आमा आंसर असला 1 ठीक अछि क्लियर अछि लॉजिकली देखले भी भूल आ ग्रामेटिकली देखले भी भूल ठीक गुड नेक्स्ट अच्छा we are going to launch this 3 crores we are going to launch this 3 crores project within the next few months 30 seconds try karo we are going to launch this 3 crores project within the next few months okay chalo dekha we are going to launch किछि भूल लागुची we subject are going to launch किछि भूल लागुची we are going to launch किछि ओटा में launch पे जाउ छे this 3 crores project किछि भूल लागुची नहीं within the next few months एतर किछि भूल लागुची नहीं ता माने कोन नो एरर होबा कथा किंतु टिके ध्यान से देखो मुझे एमती पढ़ी था we are going to launch this project within the next few months ठीक है ना ता पूर्व से गोटे एडजेक्टिव लगे 3 crores अच्छा एई पार्ट देखो जेतो आमे कहू 3 crores प्रोजेक्ट आमे तो यूनिट प्राइस मनी एगुड़ा को जो एडजेक्टिव हिसाब यूज करे आमे प्लूरल यूज करे कि आमे सबले सिंगुलर यूज करें तो कौन हम we are going to launch this 3 crores project within the next few months माने एटा एमि दबो we are going to launch this 3 crore project within the next few months it our correct sentence we are going to launch this 3 crore project within the next few months एथरा मु जहा भी भूल रहबो तार पूरा करेक्ट सेंटेंस टा भी लिखि देबी तमे भी सेठी तम खाता रे लिखि दियो ताकि तुमको मन रह जो केमिति आ काहे की भूल हैला आ करेक्ट हैला कोन हो नेक्स्ट
I hope to go to shopping this weekend if the weather permits. 30 seconds. अच्छा चलो एथर आई होप टू गो टू शॉपिंग एटा पढ़ू पढ़ू तुम टिके तो डाउट आसो आई होप टू गो टू शॉपिंग जोड़े जगह टू लगी किसी गोटे भूल हो दिस वीकेंड किसी तो भूल नहीं इफ द वेदर परमिट्स एथरे भी किसी बोले जदि वेदर परमिट कला ताहले मु जीबी तो इफ द वेदर परमिट्स एथरे किसी भूल तो ना जदि का लागु देखि दो तथापि इफ द कंडीशनल अछि द वेदर परमिट्स इफ द वेदर परमिट कला ताले जीबी कंडीशनल अछि किछि तथरे भूल नाही ग्रामेटिकली दिस वीकेंड किछि नहीं किंतु जोड़े जगह टू अछि तो लागुथो कोठी गोटे टू तो रिमूव हो आंसर पाई गलेनी ठीक अछि किछि प्रॉब्लम ना आंसर पाई जाय किंतु को टूटा जीवा आई होप गो टू शॉपिंग किमा आई होप टू गो शॉपिंग कोठा हो अच्छा जेते बेले आमे होप टू भया वर्ड यूज होप टू गो होप टू डू ए भले यूज करे तापर हमें एठी जो वर्ड टाइप नेक्स्ट वर्ड ता जेरेंड यूज है जेरेंड अर्थ कोन वर्ब प्लस आईएनजी जोटा नाउन भलिया काम करबो हैला वर्ब प्लस आईएनजी एक्टिंग एज नाउन नाउन भलिया काम करबो केम देखो शॉपिंग एटा गोटे एक्टिविटी रो ना सो मेन वर्ब इट अछि आई होप टू गो ठीक अछि टू शॉपिंग न करिकी आई होप टू गो शॉपिंग जेरंड हमें यूज करले नाउन भलिया काम करछि गोटे वर्ब प्लस आईएनजी जेरंड टा यूज करले तो एठी होबा कथा करेक्ट सेंटेंस होबा कथा आई होप टू गो शॉपिंग this weekend if the weather permits ठीक है जी I hope to go shopping this weekend if the weather permits done तो hope to go परे ए जो हुए जेरंड यूज है इमीडिएटली तापरे टू यूज हुए नी नेक्स्ट द लॉयर आस्क्ड इफ इट वाज वर्थ टू टेक द मैटर टू कोर्ट 30 seconds ओके स्टार्ट करिया द लॉयर आस्क्ड द लॉयर क्वेश्चन कला इफ इट वाज वर्थ टू टेक द मैटर टू कोर्ट द मैटर टू कोर्ट एठी किछि भूल थिला लागुनी तो एटा ठीक अछि द लॉयर आस्क्ड एठी भी किछि ठीक भूल थिला लागुनी भूल कोठी माने थाई पारे जदी एठी नाही ताले एठी थाई पारे किबा नो एरर हैला एठी देखिबा if it was worth to take एठी जोड़ गड़बड़ लागु मन रख जदि हमर अछि वर्थ तापर भी जेरंड लागे ता माने टेकिंग हवा कथा वर्थ पर टेकिंग हवा कथा
तामने एटी वर्थ माने टेकिंग होगा कथा तो एटी टू टेक इज रॉन्ग तामने हम आंसर टा टू तो करेक्ट सेंटेंस को होइतांदा द लॉयर asked if it was worth taking the matter to court. ठीक है जी. The lawyer asked if it was worth taking the matter to court. ठीक है जी. It have a correct sentence. Next, after a careful investigation, we discovered that the house was infested with termites. After a careful investigation, we discovered that the house was infested with termites. 30 seconds. ठीक है जी. Let's start. यादरे विशेष किसी नहीं देखु देखु जानी पर जाऊ थो कि केयरफुली टा भूल जागर अछि कारण एटा एलवाई केयरफुली होची एडवर्ब. Adverb is used to modify. Adverb is used to modify verb. किंतु एटा verb की investigation name of a process noun एटा after a careful investigation हबनी noun को modify करंती adjective. Adjectives modify nouns. तो कौन हवा कथा एटा हवा कथा कौन after a careful investigation we discovered that the house was infested. After a careful investigation, we discovered that the house was infested with termites. Chalo. Adverb is used to modify verb. Adjectives are used to modify noun. So noun. So just हमें ly remove कर देले हमारा sentence टा correct है जीवो. Next. अच्छा. SSC CGL रो. The future of food companies seems quite secure owed to ever growing demand.
अच्छा, द फ्यूचर ऑफ द फूड कंपनीज किछि भूल लगुचे नो seems quite secure मैं लगुचे काफी सिक्योर seems quite secure लगुचे काफी सिक्योर ओड टू एवर ग्रोइंग डिमांड माने जेहेतु आमे कौन कहू जेहेतु डिमांड तांकर बढ़ी चलची सेति पई तांकर सिक्योर अछि एठी ओड टू होबनी कारण हम कहू जेहेतु बिकॉज सेंस रे आसे कथा ओड न हे कि सेठी आसीबो ड्यू टू एवर ग्रोइंग डिमांड हैला ओड माने बिकॉज नुह ड्यू टू माने बिकॉज ओड टू माने बिकॉज नुह तो सेठी को आसीबो द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनीज अच्छा ओड टू रो अर्थ हो कारण रु हैला ओड टू ड्यू टू कारण माने माने एथि पाई बिकॉज रो सेंस ता आसीबो ड्यू टू संगे ओड टू हेले एही जोगु हे के आसीबो तो सेति पे हमें ड्यू टू लगे जोटा की क्लियर तो एटा कोन सेंटेंस हबो द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनीज seems quite secure due to ever growing demand है ना due to O2 होनी let's try the next one अच्छा एटा होची the vaccine when hit the Indian market the vaccine अच्छा तम इजी पाई मैं जोटे कॉमा लगे दूची जानी परिबो कोडी भूल अछि the vaccine when hit the Indian market is dogged by controversy 30 seconds एटी गोटे कमा लगे देले सेंस ता बुझी परियो ठीक करी हला अच्छा देखो एमिति पढ़लो the vaccine is dogged by controversy meaning आछे ना नहीं the vaccine is dogged by controversy meaning आछे त माने मीनिंगफुल सेंटेंस हला एटा गोटे क्लॉज एठी आपे आउ गोटे क्लॉज आनिले when hit the Indian market क्लॉज स्ट्रक्चर कोन ता दरे सब्जेक्ट थिबा कथा एक क्लॉज रे सब्जेक्ट काई एक क्लॉज रे सब्जेक्ट कहीं वर्ब अछि सब्जेक्ट कहीं तो क्लॉज माने तादरे सब्जेक्ट थिबा कथा तो मिस्टेक ता कोड रहला एडी तो करेक्ट सेंटेंस कोन होबो एमति लिखाबो सेठी कॉमा नथिला सेत पे मु आउथर लिखि दो ठीक कर केन लिखाबा कथा द VACCINE vaccine comma when it our subject it hit the Indian market is dogged with controversy असला जेहेतु आमर गोटे क्लॉज थिले कोन होगा we need a subject for the clause we need a subject and a verb for the clause subject अछि verb अछि एबे क्लॉज तक कंप्लीट हला सेठी क्लॉज ता इनकम्प्लीट थिला
तो क्लॉज स्ट्रक्चर टा एमिति हवा कथा. So this is should be the correct answer. The vaccine when it hit the Indian market, तो हम आंसर हवा कथा 2. Let's try the next one. 30 seconds. Do you know that it was I who has done this piece of beautiful work? ठीक अछि. अच्छा एठी गोटे जिंस टिके कंफ्यूज करी पारे, बट देखो, डू यू नो दैट इट वाज आई. अच्छा एटी जोड़े अच्छे, डू यू नो इट वाज आई. ठीक है. हु हैज डन दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क. एटी तो किछि भूल लागुनी. हु हैज डन किछि भूल नहीं. सेमती तो सेंटेंस स्ट्रक्चर से आया कथा. हु हैज डन दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क. एठी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेमती आवा कथा. क्वेश्चन होची ए हु टा काहा को रिफर करूची. इज इट रिफरिंग टू यू or is it referring to I? एटी कौन करछि हु जेते हु परे जो वर्ब लगे से एंटीसीडेंट माने हु जहा को रिफर करूथिबो ताकू लागिबो. एटी हु कहा को रिफर करछि I को. डू यू नो दैट इट वाज I हु मु जे की. सो इट इज रिफरिंग टू I. तो आई संगे को वर्ब लगे, हैज लगे ना हैव लगे. हैव. तो एटी भूल कोड होला 2. ऑल दो सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक अछि. प्रोनाउन कहा को रिफर करूची सेटा को देखियो पड़िबो हैला. हु कहा को रिफर करूची सेटा देखि देले तमे जानि परिबो को जगह रे भूल अछि. हु जनरली लोक माने कंफ्यूज कर दे यू संगे कर देले. हु अछि माने एठी एठी यू भी अछि एंड से ताको से हिसाब रे ताको ठीक करके चेष्टा करले, बट इट इज रॉन्ग. देखिबो कहा को रेफर करूची. कंफ्यूज होबार किछि नै. सेंटेंस पढ़ले ही जानि परिबो कि हु कहा को रेफर करूची. हु जहा को रेफर करूची ता हिसाब रे हमें वर्ब चेंज करिया. तो हमर सेंटेंस होबा कथा डू यू नो दैट इट was I who have done है जेहेतु यह हिसाब से चलची. सो द आंसर हो डू यू नो दैट इट वाज I who have done this piece of beautiful work. डन. ठीक है जी. नेक्स्ट. Every conceivable race and nationality had its shared of suffering in the world wars. 30 seconds. Now one of the most easiest one. एटा एते भी डिफिकल्ट नुह कहीं तुम जो पढ़ु पढ़ु आमर अभ्यास अच्छी गोटे पर्टिकुलर वे रे कहया से तुमको जना पड़ जाइथिबो कि तथापि जदि न जानि पाछ. देखो एवरी कंसीवेबल रेस एंड नेशनलिटी. अच्छा कंसीवेबल अर्थ कोन जहां आमे भाबी परिबा. जहां जहां आमे भाबी परिबा से कुछ एवरी कंसीवेबल रेस एंड नेशनलिटी
आमे जो रेस किबा जो नेशनलिटी विषय भी आमे भाबी परिबा had its share of suffering ei patta shared of suffering in the world wars किसी नहीं had its shared of suffering केबे had its shared of suffering सुनि जके shared होची past tense of share shared of suffering कौन सी सेटा बगैरह कौन share had its share of suffering in the world wars ठीक लगुची तांको पार्ट तांकर शेयर टा थिला the share of this share of that share of a big chunk सेगुडा so every conceivable race and nationality had its share of suffering it a share of suffering way every conceivable race and nationality had its share of suffering in the world wars clear chalo next 30 seconds acha if you had told me conditional statement if you had told me I would have helped you solve the problem if condition जो लागिवो त मेन क्लॉज रे would लागिवो ठीक अछि if condition जदि लागुची त मेन क्लॉज रे would लागिवो ये ठीक अछि ये भी ठीक अछि if you had told me I would have helped you ठीक अछि solve the problem यादर कौन बोलो solve the problem would have helped you solve the problem ता माने एटा भी ठीक अछि एटा भी ता संग एग्री करछि एटा भी ता संग एग्री करछि आंसर कोन हो नो एरर या फिर एरर ही नहीं एटा थिला एसएससी सीजीएल रो माने आई थिंक एटा 18 के 19 को थोड़ा सला फर्स्ट क्वेश्चन थिला पिला ने कंफ्यूज हे थिले सो नेक्स्ट द अरेबियन नाइट्स आर indeed an interesting book जेमती लिखा है कि सही पैटर्न को नोटिस करो संगे संगे तुमको बुलटा मिल जियो 30 seconds देखो द अरेबियन नाइट्स या अर्थ कौन गोटे बही ना द अरेबियन नाइट्स आर केमती हो गोटे बही ना टी इज होनी द अरेबियन नाइट इज इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक देखो जी दिस बुक इज मुझे लगा दिस बुक इज इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक किसी भूल लगता ना कि बही नाटा होची अरेबियन नाइट्स ए जे एस लगी जी पिला माने एडी कंफ्यूजन अच्छा अरेबियन नाइट्स बोले कोन प्लुरल हेतु ना एटा बही ना द अरेबियन नाइट्स इज इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक एतिकी याद रख किछि विशेष नथला तो क्लियर नेक्स्ट को जिबा अच्छा ही लव्ड हर डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ अरे এটা তো बहुत इजी फटाफट मिल जाओ ठीक है 30 सेकंड्स
ए भलिया सेंटेंस पढ़ू पढ़ू तुमको मिल जा कथा कारण मु कहि भी दिली कि इन स्पाइट ऑफ सॉरी इन स्पाइट ऑफ किंबा डेस्पाइट है डेस्पाइट लिखिया जहा इनस्पाइट ऑफ लिखिया से केबे भी डेस्पाइट ऑफ लिखा हुएनी कारण इनस्पाइट ऑफ हे जाइथांदा एई लॉजिक टा खाली मन रखो बाकी किछि मन रखे दरकार नहीं इनस्पाइट ऑफ रो अर्थ होची डेस्पाइट ऑफ नुह तो एठी डेस्पाइट ऑफ लिखा है एठी देखि देखि तुम भूल जान जाइथलो कि एटा होची भूल he loved her despite of himself despite himself हे थांदा ए पार्टटा भूल ठीक अछि नेक्स्ट of all the models Jessica is the more good looking one very good 30 seconds फटाफट जो very good I am Guru Prasad पूरा करेक्ट आंसर ओके एडा ऑफ ऑल द मॉडल्स एडी देखो ऑफ ऑल द मॉडल्स माने जत्ते भी मॉडल्स अछंती तांको भितरे जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन ए पार्ट देखो द मोर गुड लुकिंग वन मोर आमे कोठी यूज करू अच्छा गोटे होची कंपैरेटिव आ गोटे होची सुपरलेटिव कंपैरेटिव कोड यूज हुए जेते बळे आमे दीटा मनीष जिनिस किंबा दीटा वस्तु भितर जो आमे कंपेयर करू सेते आमे लगा कथा मोर जेते बळे दुई रु अधिक थिबो ताले आमे कोन लगा कथा मोस्ट एटी कंपैरिजन कहा रहउची जेसिका रो आउ सबु मॉडल मानन संगे जेसिका रो कंपैरिजन होची दुई रु अधिक कंपैरिजन होची द मोर हबा कथा न मोरटा होची कंपैरेटिव मोस्ट होची सुपरलेटिव द मोस्ट गुड लुकिंग वन ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोस्ट गुड लुकिंग वन हैला वेरी गुड देखी वेरी गुड सुनीता रथ आई एम गुरु प्रसाद दी जन को करेक्ट आंसर देचंती the most good looking one very good next Eda when I went there Charles is playing a game of chess एथरे की भूल आराम से मिल जो तो फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस थर्ड सेंटेंस पढ़ो संगे संगे मिल जो देखो फटाफट I am Guru Prasad. Very good. Very good. Very good. Very good explanation. Explanation भी भल देइछ गुरु प्रसाद. So कौन आंसर हबो? फर्स्ट देखो when I went there आमरो सेंटेंस स्टार्ट होची पास्ट ट्रू. Charles is playing कंटिन्यू करची प्रेजेंट ट्रू. केबे भी ठीक हो माने केबे भी ठीक नो
जदि सेंटेंस पास्ट अछि पास्ट रहइबो प्रेजेंट थिले प्रेजेंट रहइबो तो व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग भूल हबो एडी कोन बोदा चार्ल्स वाज प्लेइंग द कंप्लीट सेंटेंस वुड बी व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स was playing a game of chess. When I went there, the Charles was playing. Went there, Charles was playing a game of chess. ठीक है जी? We'll go to the next one. अच्छा. अच्छा. The way to increase the production of the food is to bring more land under cultivation. Try करो 30 seconds. टिके ट्रिकी अच्छी यदि ध्यान देव आराम से मिल जाओ गुरु प्रसाद देखिए तुम्हें कौन कौच सुनीता तुम्हें भी ठीक ट्राई करो दी जन को ठीक ही दौच आंसर गोटे छोट मिस्टेक अच्छे विशेष मिस्टेक नहीं गोटे छोट मिस्टेक अच्छे I did not find any error in अच्छा सेटा तो ट्रिक कि देखावनी इमिडिएटली देखावनी किंतु सेंस लगेले टिके कॉमन सेंस लगाओ संगे संगे जाना पड़ जाओ देखो द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड द हवा कथा कि फूड इज यूज्ड इन जनरल जनरली आमे फूड ही को रिफर करूछु द फूड माने को फूड विषय कहूछु कौन से स्पेसिफिक फूड विषय तो कहूनी तो आमे कहूचे जनरली आमे फूड विषय कथा होचे ताले कोई डेफिनेट आर्टिकल के लागिबो द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड इज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड इज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन है मैंने जनरली फूड रो प्रोडक्शन बढ़िया के फूड रो प्रोडक्शन बढ़िया के सही फूड रो प्रोडक्शन नो फूड रो प्रोडक्शन बढ़िया के हमको बेसी लैंड आने अच्छी सेंटेंस शुड बी रिटन लाइक दिस द वे टू इंक्रीज the production of food is to the way to increase the production of food clear ना भूल नुह सेटा ट्रिक आगु मन रखियो गुरु प्रसाद आगु मन रखिले देखियो ए छोट छोट जिंस जो तुम धर दल संगे संगे आराम से तुम आंसर हो जिवो नेक्स्ट द गर्ल्स वॉच्ड इंटेंटली as the model applied her makeup with a practiced hand the girl watched intently माने पूरा इंटरेस्ट सहित as the model applied her makeup with a practiced hand 30 seconds सेंटेंस टा पढ़ो द गर्ल्स वॉच्ड इंटेंटली माने ध्यान से देखुथिले जेतेबेले मॉडल टा मेकअप अप्लाई करथला तांकर प्रैक्टिस्ड हैंड माने जो माने तांकर जेहेतु सेटा प्रैक्टिस हो जाईची
तो से पूरा प्रैक्टिस प्रोफेशनल भाया से यूज करथिले सब्जेक्ट द गर्ल्स वॉच्ड ठीक अछि द गर्ल्स अछि वॉच्ड अछि ठीक अछि एज द मॉडल अप्लाइड मॉडल सब्जेक्ट अछि मॉडल अप्लाइड ता संगे भी ठीक अछि पास्ट को पास्ट अछि मेकअप विथ अ प्रैक्टिस्ड हैंड एटा जस्ट एक्सटेंशन किछि अदर भूल नहीं तो यार एरर कौन हो नो एरर द गर्ल्स watched intently as the model applied her makeup with a practiced hand फटाफट किछि भूल नहीं आंसर इज देयर देखिए यस वेरी गुड गुरु प्रसाद नेक्स्ट if he is a millionaire he would help the millennium project 30 seconds if he is a millionaire he would help the millennium project देखिए एल वाई लगे गुरुप्रसाद एल वाई लगे कौन हम जेनुअली राइट अच्छा एटा इफ he is a millionaire he would help the millennium project एटा if conditional अच्छी अच्छा if conditional अच्छी कि एटा कौन if he is a millionaire it is a hypothetical conditional मतलब hypothetical जिनसे कौन होची यदि हाइपोथेटिकल जिनस यूज करे आमे कौन यूज करे सेकंड कंडीशनल यूज करे ना कौन आमे तो हाइपोथेटिकल को है आमे से तोले सेकंड कंडीशनल यूज करे तो सेठी कौन यूज होबा कथा सेठी यूज होबा कथा वेयर एटी कौन होबा कथा इफ ही वेयर अ मिलियनेयर he would if would where second conditional तो हम भूल टा कोड रहला फर्स्ट पार्ट रे if he were a millionaire he would help ठीक गुड देखिए कौन कौन ची वेरी नाइस गुरु प्रसाद ठीक करचंदी नेक्स्ट अच्छा the prime minister along with his cabinet colleagues have been welcomed by the chief minister at a formal ceremony एटा सबुटु कॉमन सेंटेंस याद भूल खोजिए सबुटु सहज टेल मी 30 seconds ओके कौन असला ना 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 अच्छा द प्राइम मिनिस्टर along with लागिला परे एटा होची देखो प्राइम मिनिस्टर इज सिंगुलर कैबिनेट ऑफ कलीग्स होची प्लूरल तो along with लागिले वर्ब कहां संगे एग्री करे फर्स्ट सब्जेक्ट संगे कौन प्राइम मिनिस्टर तो कौन द प्राइम मिनिस्टर along with his cabinet colleagues has been welcomed by the chief minister verb along with जेतले लागे जेतले along with we use करू ताले सब्जेक्ट चेंज हुए नी सिंगुलर जदी along with पूर्व जदी सिंगुलर थिबो तो सिंगुलर लागिवो along with पूर्व जदी प्लूरल थिबो तो प्लूरल ही हबो तो ताप अलग विथ पर जहां भी रहिला सेटा किछि इफेक्ट पकेइबनी सो द प्राइम मिनिस्टर along with his colleagues has been welcomed से हबो आंसर नेक्स्ट अच्छा एटा लास्ट थला ओके
ठीक अच्छे एटा थिला हमरो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। तो आज हम 23 टा क्वेश्चन डिस्कस करछे एसएससी सीजीएल बैंकिंग सबठू मिक्स करके नेक्स्ट क्लास रे आउ पीवाईक्यू आउ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस गुडा भी हमें डिस्कस करिवा। सो ऑल द बेस्ट एंड वेरी गुड वर्क गुरु प्रसाद। अच्छा।